and blessings on the auspicious day of Guru Purnima. Really, we are overwhelmed with the blessings of our respected Gurudev, Professor Harishankar Sharma ji, Professor S.N. Pandey ji, Dr. Sudhakar Reddy ji, Dr. Jagdishwar Doma ji. Now also we have a senior Gurudev, Professor N.V. Srivatsa. Thank you very much, sir, for joining with short notice. Madam Parul Joshi ji, respected Madam, really we are grateful to you all. And Pranjal Joshi ji, our dynamic Professor of Physiotherapy. Thank you very much again, sir. I would like to communicate my sincere regards to Dr. N.V. Srivatsa, Merma Specialist, ex-State Coordinator, Sport Ayurved Research Cell, ex-Principal and Superintendent Ayurved College, Coimbatore. So without wasting much time, on Sport Journalist Day, today is Sport Journalist Day. So I would like to request Professor V.K. Agnihotri sir for brief preamble. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. Again, it's our great pleasure that we are celebrating this webinar on an entirely different subject. As we all know, sports are the life of the living beings. बचपन में पढ़ा था खेल शिशु जीवन का प्राण है और वो शिशु जीवन का प्राण इस रूप में है कि वो हमारे सर्वांगीण विकास के लिए सबसे आवश्यक प्रक्रिया है. We can only develop into English, sir. Request for English, sir. Oh, so what we say that we can only develop in totality when our mind, body, everything will be developed concurrently and in a rational manner. As per the physical health, physical age, our mental age should also be coordinated in that way. For that, circulation, diet, sleep, movement, physical activities, pleasure, worship, spirituality, everything is life. And we do understand that the life itself is a great sport. It's a fullest game of our government of God. It's a God's pleasure. Chiti Siddhantata Vishwasiddhi Hetu. It's the creator who plays making all of us, all the creatures, and he enjoys. So in this way, when we are here on earth, we do our duties, we develop, and in this due course of journey, we used to get some injuries. We are hit by words, mentally, physically, of course, sometimes socially. So warning of all such type of untoward situations, our body, our mind, our soul, our activities, our output should be in such a manner that we should be prove ourselves favorable to the other. So this is what may be the essence of the sports journalism, that how can we communicate our status of health, mental and physical, social, to the persons belonging to us or coming across to us. And incidentally, if any unfortunate situation happens, for that, what may be the best healing ways and means. With these words, we thank so much, and we do hope that the knowledgeable persons are going to enhance our knowledge with the help of their knowledge, experience, and the real sense, say, output with the words of sweet words which are acceptable to all the persons. Thank you so much, and over to Pawan Sharma ji. Namaskar. Thank you very much, sir. Now I would like to request Dr. Srivat sir, Dr. N.V. Srivat sir, kindly unmute yourself, sir. Am I audible to you, sir? Please unmute yourself. There is a sign of mic. Yes. Welcome, sir. Welcome, sir. Namaste, sir. Namaskar.
Namaste, namaskar. Professor Harishankar Sharma ji is also with us today. I think it is audible. Here Yes. there is monsoon has started and heavy rain is there. So I think am I audible? Okay, sir. May at the outset congratulate Pawan Kumar Sharmaji and all the team for the what you call perpetual flow of knowledge in the through the forum. It is the 818th seminar, and I am very grateful to Pawan Kumar Sharmaji to have recalled me after 2 years. I am in between. I have been attending. In between, I have not been. But 2 years back, when the COVID was on, and when this program was started for disseminating the information of Ayurveda, knowledge of Ayurveda, it was at the national level and then it is now at the international level. And I also am very glad to be with Vaidya Parule Joshi and Dr. Prajnal Joshi. And my regards are there to Professor Vineet K. Agnihotri, who is always a smiling face in this forum with his very judicious sharing of knowledge, and Professor Vishnu P. Sharma, and all the others who have joined here on this day, Harishankar Sharma ji, then Seena Anderson, Dr. Rampal Somani, Professor Dr. Nishant Shukla, Lakshmikant Dwivedi, and all who are present in this forum, and all who may be looking at the shared information by Dr. Pawan Kumar Sharma ji. A wonderful evening, and I thought it was a short notice. Of course, I was going to the practice, and then I thought that okay, when Dr. Pawan Kumar Sharma ji invites, I have to be there. So today I asked, welcome sir. And today I thought that I will, because the topic is new spectrum for sports medicine and therapies, and as a small person who has been involved for a small time for the sports Ayurveda, I believe that I'm very glad that an MSc course has been started in Marmology and Sports Medicine in the National Institute of Ayurveda, and so all the efforts taken are having its own effect, because the subject is getting popular. And I would like to speak today on the repeated stress injuries and their management, how we apply it in the normal level and how we apply it in the sports field. So Ayurveda is a very rich, this one in Abhigata Chikitsa also we know, and so we are adept in very well handling the sports injuries. We are also good in preventing sports injuries, and we are good in rehabilitating sports injuries. And the way the Kalari or the Nadi Marma Abhinga is being used for this purpose is very exclusive contribution of Ayurveda to the sports medicine. So I would like to share a few slides regarding this one. I will be talking on the repeated stress injury. Sir, can I share the slides? Sure, sir, sure. No, sir. Sure. Welcome. Okay, some Ayurvedic thoughts on the chronic repeated stress injuries, especially in the sports field today. We know that the athletes, the sports person are very much exposed to some particular type of injuries in their sports field. For example, if it is a cricket bowler, he has, that the shoulder, so much of
the force is there from the shoulder, so the shoulder is always prone for repeated or chronic stress injuries. Like that, the knee joint, every other joint, depending on the sports in which they are playing, there will be repeated stress injuries. The very common things which we talk about is like the tennis elbow, the golfer's elbow, the runner's knee. Such conditions are due to repeated stress injuries mostly. And whether IRES has anything to do on this one is one of the important things which we have to look into. So I'm going through the Ayurvedic thoughts. In Ayurveda, when we consider for this Krida Ayurveda, we have to consider about the Abhighata rogas, that is traumatic injuries, Shofa, inflammatory conditions, Vrana. All the references we get from the Vrana Chikitsa, Sadhya Vrana Chikitsa, Shofa Vrana Chikitsa, and in Vadarakta Purana or Gambhira Vadarakta, then Puna, repeatedly getting injured means that the person is being exposed to a similar sort of negative force in the which hurts the tissues. Aghata or stress. Now, when we are classifying fractures, also there is one fracture called the stress fracture, a march fracture, a fracture of the second metatarsal shaft of the metatarsal, which happens due to the marching. So you know that the aghata, then the kshada, direct injuries, sports and games, that is kaiga abhyasa, vyayama, krida, etc. So in all these conditions, repeated stress injuries come, and in sports and games is the topic which we are the concern today, and we will see that what are all the other general considerations which we should make. Marmabhighata under the context of repeated stress injury. Now we will be talking about the marma abhighata, that is the injury to the marmas. Every time the injury to the marmas need not go for a death or anything. You know the classifications are there. That is what follows as the Rujagara marmas. The Rujagara marmas are marmas where the injury will result in continuous pain, or even after long period after the treatment also the pain continues. And it is a very painful situation, and the very common areas you know that is the ankle injuries where the kurcha, the gulfa is involved, the manibandha is involved. So these are Rujagara marmas. And then Vaikalika marmas are those marmas which are causing debility or defect, some sort of handicap. Now it is the biggest fear of any athlete that his Rujagara marmas are involved. He is injured and he goes for any Vaikalika marma injury and then he is out of the field. So as Ayurvedic doctors who are involved in sports medicines, we have the opportunity to remove the Ruja as well as prevent any Vaikalya and put him back into the field. Now, so it all depends on, we will have to consider the structure of the marma involved, the Buddha predominance in the marmas, and skill of the Vaidya. That is why a new group of Vaidyas who are adept in marma chikitsa and who can adapt it to the sports injuries have been developing their skills. And Kerala is a place where you have big names in sports Ayurveda, and the biggest 50-bedded sports Ayurveda is hospital is also running in Kerala under the government. So we have the sports Ayurveda research cell, and we had the opportunity to work in that. And still the team is very active. The new team is very active in Kerala, and I am very glad that I was one time representing that. Now we will have to consider in this a Nava injury, that is Sadhya Vrana, Purana, that is when it becomes chronic, Nava or Purana or Gambhira, that is immediately acute, subacute, acute upon chronic, and then chronic. So now considerations for treatment of any repeated sports injuries as far as sports injury through Ayurveda treatment is considered. Chikitsa is based on the Shashti Upakrama of Sushruta, Prana Chikitsa. So all the methods which are mentioned in that come handy when we are trying to treat any sports injuries, that those repeated sports injuries in an athlete. Generally what we can say that it is Shofahara or anti-inflammatory,
Rujahara, Lepa, Seka, etc., which are those lepas and sekas which remove the pain. For example, we are using the Nagaradi Churna. We have got the different types of lepas which are removing the swelling as well as the pain. And we have a particular method of prayoga called the Upanahana Sweda or Upanaha Sweda, which is also indicated in Snayu Gata Vata. So whenever we find that the sports injury is in a snayu or a ligament or a tendon, and when it is involved, the vata has increased over there. There is the chadoshma. First, the chadoshma is treated by Seka lepas, and then the ruja is removed by application of sweda karma. That is the application of cold followed by application of warmth whenever it is needed. And Vapahara Chikitsa, we know that it is the Snehana, Swetana, etc. And in Kerala, we find that all the Marma Vaidyas who are involved in sports medicine are very adept in Thadavi Kettuga. That means that you massage and then bandage. So bandaging will be usually done with a piju, where the piju is impregnated with oils like Muruvanna, etc., which are Chadandaka Taila, which removes the. And with the Muruvanna is the one which we are using for fracture management even. Then Veshtana in Chalavata, that is Atiyoga. Whenever there is a injury to a joint and the joint has become more mobile or it has become slack, we call it Slata Sandhi. There what we will have to do is that to restore the strength, we will have to do Veshtana, and Veshtana also is done, that is tight bandaging. Nowadays, many Veshtana procedures like the braces are available until the patient, until this athlete is back to normal, it is being used. So in Veshtana we have different types of what you call it is tight bandhana, and like application of it is different from in different places or sites. For example, if it is a joint which is involved, we go for the Swastika bandha, and the Veshtana is also like that. Parishega in Stiravata, whenever there is a Hina Yoga, when Vata Pravrti is Hina, then a joint movement or any movement, any muscle movement, whatever it is, the movement will be restricted. So to remove the restriction, what we do is to give Parisheka or Dhara Chikitsa, which improves the Chalatva of the Vata. So from this we can understand that it is a very scientific approach in Ayurveda, that Ayurvedic sports medicine, whenever we are treating the patient. So many of the athletes have, those who are in different sports have different needs. For example, a sprinter is different from he needs speed, he needs movement. Whereas there are some sports where the endurance has to be more, where you have to see that the power or the strength of the muscles have to be improved. So in rehabilitation, these very methods which we use are logically selected and used. And Anubandha dosha lakshanas like Sukti, Daha and other things have to be dealt by using the particular medicine. So that is why we use the Nagaradi Lepa. Sometimes if Kavanuvandha is there, we use Kotanchukadi Lepa. If it is a Rakta involvement is there, we go for Jatamayadi Lepa, etc. So just some examples I am giving. Now modalities of treatment are, these many modalities of treatment are used in repeated stress injury management in a sports person. So we can see that Abhyanga, Mardana, Trasana, Vimlapana. So I think it takes a longer time to address all these methods. But Abhyanga, we know that it is an oil massage. Mardana, whenever there is a friction massage or a pressure massage is there, it is called Mardana. Trasana is beating or the other types of percussion massages. Vimlapana is either you massage with the Angushta or Panitala or Venunava. So then Udvartana, Utsadana may be, they are also useful. Marma Asti Vrittigara Chikitsa, Mansa Asti Vrittigara Chikitsa. So wherever there is a repeated stress injury, due to disuse, there can be Mansa Chaya, there can be Asti Balachaya. So those Chikitsas, that is using of Tikta Yukta
Chiras or Gritas, which are Tikta Yukta, such medicines are being used. Gatavada Chikitsa, that is, I told that Snayu Gatavada Chikitsa, if it is Sira Gatavada Chikitsa, those methods are used. Then we have to consider about Avarana. Avaranavada Chikitsa is done. Ultimately, in rehabilitation, when you want to give more strength, Balya Rasayana Chikitsa is used. We have Gandha Taila, which is the ultimate in Asthisthairya. We have Kshirabala Taila, we have 101, we have Dhanvantaram Tailam, which is also indicated for Marmachada 101. We have many other medicines, like sometimes we have to give more bulk to the muscles, then Mamsa Rasayanas are there, Rajamamsa Rasayana, etc. are there. So we know that Ayurveda is having a rich formulary for repairing the repeated stress injuries in an athlete. Sthitisthavana or Sthairikara, that is bringing back the organ or the affected part of the body to normalcy. Now, Shita versus Ushna Chikitsa, that is, whenever I have already explained that when we use the Shita Chikitsa, when we have to reduce the Chata Ushma, the Ushma due to the inflammatory procedure, due to the trauma, then we will have to have Shita Chikitsa. Whenever we have to give Chalatvam, when we have to give mobility, when we have to remove stiffness, then we will have to use Ushna Chikitsa. Sandarpana versus Apatarpana Chikitsa. There are some situations where in the inflammatory condition is there, we have to use Apatarpana Chikitsa only, followed by Sandarpana Chikitsa. Even Vagbada has indicated the same thing. Brahmyamstu Mridulangiyet. That Mridulangana has to be done, Agni has to be corrected first, and then Sandarpana has to be done. This is very important as far as a sports person is also considered, because repeated stress injury which is just managed will be okay for that occasion. Again, the same place will be getting injured and getting hurt. So an Ayurvedic intervention says that he is Sthitisthavana and Sthairikara Chikitsa is also included in that. Some treatments are Bahya in nature and some treatments are Abhyantara, or they are done together also. Now, common repeated stress injury pains are that sort of, they involve the Rujagara Marmas, wrist pain, in many of the conditions where the player is using the wrist. You know that there is much chance of repeated injury to the wrist joint. Foot pain, Padaruja, plantar fasciitis, and many other conditions, metatarsalgia, podalgia, and other conditions due to running, due to in football, etc. Ankle pain, ankle is the most commonest injury. We can say that sprain, and then in such a way, if it is a sprain, it is an acute injury, but they slowly develop Achilles tendinitis, that has to be treated as a repeated stress injury. Neck pain, cervical strain in archers, those who are throwing javelin throwers, there is lot of jumpers or in pole vault jumpers, you know that there is lot of involvement of the neck. Low back pain, almost all sports where you know that there is a running or jumping, jogging, all sorts of sports will have a chance for the athlete developing low back pain. Shoulder pain, without any doubt, wherever throwing, chucking, or using a racket or stick to play, bat to play, their rotator cuff lesions due to long-term exposure can be there. So these are some of the examples. Knee pain is we deal it as Januruja. It can be patellofemoral injuries involving the patella and the knee joint femur, or the structures like the medial collateral ligament, lateral collateral ligament, the cruciate ligament, the meniscus, whichever part is involved. And we know that Janu Marma is a Panitala Marma, so it involves the 4 angular space at the Janu region. Elbow pain, we told about the tennis and the golf course elbow. Medial epicondylitis, where you know that where the muscle is joining, the muscle tendon is joining the bone or the covering of the bone, there inflammation occurs, and that goes for tendinitis, and which later slowly slips into tendinosis, which is a degenerative change. Muscle pain, bone pain, these are all the things which can come. Shin splints,
I told about the Osgood-Schlatter's disease in very young adults, footballers, etc. And it can be involved with a circulatory and neurological complication also. Whenever there is a murmur injury, whenever there is an injury to joint, this can be neurological and circulatory. So one example is the tardy ulnar palsy with late presentations, which are sequel, which we call in Ayurveda as Udarka, which is sequel. Now, general conditions delta, scar formations in the tissues, adhesions in the tissues, restrictions of the movement of the capsule, joint capsule, etc., which leads to stiffness. Spasms and pulls. Muscle spasm are very notorious. Hamstring spasm, hamstring pull. These are some of the examples. Tendonitis already we have discussed. Ligament ruptures. I told about the various ligaments inside the knee joint, which is very, very prone for this one. Osteochondritis, that is why Osgood-Schlatter's disease, I told one example. And then muscle strains. So these muscle strains, how we are able to deal with in a very good way and put back the athlete back into normal playing field. Now, practical approaches are contributions of Kerala Vaidyas, the judicious use of Bhagna Chikitsa. That is where I told that Tadvi Kattiga is the method. Thirumu Chikitsa, that is the massage treatments where sports Ayurveda massage is very much useful in preparing the athlete, and then what you call during the event to give some comfort to the athlete, and post event where we are rehabilitating any injury or to recondition the muscles, etc. Kadari Chikitsa, as in the martial art school, Nadi Marma Chikitsa, as I told, Tamil Varma Chikitsa is also incorporated for pain management very successfully. New applications of Agni Karma, Rakta Moksha, etc. are also being used. So with this, I stop my short presentation. I think I could give some overview of that. So let us discuss, let us deliberate, let us decide, let us do, and bring good name for Ayurveda in that in whatever possible way we can. And long live Ayurveda. We love Ayurveda, and it's all the aspects where it can be universally useful. We will be glad to contribute towards that. And once again, I appreciate the effort of all the team in IRES for their enthusiasm, for their effort, and for their willingness to make others also participate in that thing. Thank you very much. Namaste. Thank you very much, sir. Gratitude. Kindly do join, please, as and when you have time and topic of your choice. We will be troubling you again and again. So nice, sir. It is not at all a trouble for this. I am in service of Ayurveda. So we are proud of our whatever we are doing. Thank you. So nice of you. So nice, sir. Agnihotri, sir. Sir, thank you, sir. I was just thinking that you repeatedly say that we will be troubling you again and again. So I think any guest speaker would like to come that no, we are not feeling any trouble to join you. And the same the same he answered in the same manner. This is our pleasure. And joining by you people, this sort of this level of distinguished person, they really grace our platform, and not only by their presence, by their knowledge, by their experience, and it becomes vital. You talked in a so simple manner, and with the information, and recalled our 50 years back studies, Rujakar Marma or Anath Marma, all the 107 marmas came in our mind. Shangatkan Nidipati Kanto Shank Shiragudam Hedem Vast Navicha Ganant Sadhu Hotanitu. Sadhu Har Marm. So thank you so much, and really we miss you if you make a big gap, not joining our platform. As you told that almost more than 6 months or so, you are not making your presence. So thank you so much, and please be in our platform to grace again and again. Thank you, sir. Namaskar. Thank you. So nice of you. Thank you, sir. Kindly communicate our regards to Madam Aarti also. Welcome. Thank you. So now I would like to request Madam Parul Joshi, ex-principal,
State Model Institute of Ayurvedic Sciences, ex-principal, Bala Hanuman Ayurvedic College from Ahmedabad. Welcome, madam. Welcome. Namaskar, everybody. I would like to start my presentation with Guru Vandana, as Welcome, madam. was done by previous speakers. I just want to add to it. Kabir has said, Hari ruthe Guru thaur hai, Guru ruthe nahi thaur. So without the Guru, everything is impossible. Even my speaking on this, my preparing this presentation is all dedicated to my Guruji, who has been a guide. And even people who don't know me say that there is some energy behind you that is guiding you. And I always say, yes, I'm thankful to my Guru. Because of him, I'm what you see me today. So many times, because of my senior age, I'll just retrospectively view how I was and what I am now. I didn't know Gujarati and I studied in Gujarati. I got university first and made this career in Gujarat. So that's all due to his grace and many things which I didn't know and I have been able to do. That my ignorance, I have been harassing him, but he has always been a patient and a very motherly guide to me. So with pranams to him, I go ahead. Ayurveda as sports medicine and therapy, as my former speaker has spoken such a wonderful thing on this. But I would like to share my experiences with sports people and authorities in Sports Authority of India and Sports Authority of Gujarat. I have been a part of Khelo Gujarat. The slogan was Ramshe Gujarat, Jitshe Gujarat. So I started my career with a smile that we are playing and we will win. Then I understood that the slogan meant sportsmanship. And I can see in the primary schools, even in kindergarten children, in small children and their parents, a big change has come because of SAI, that is Sports Authority of India, and its branch, Sports Authority of Gujarat. So Khelo India is a slogan which is changing India. We are going towards new India, and it's a very, very positive India. So what is sports? Sports is an activity involving physical exertion and skill in which individual or team competes against another or others for entertainment. So here you can see that sport is defined as social skills, physical fitness, obedience, resourcefulness, teamwork, and stress tolerance. So this stress can be physical, emotional, mental, psychological, social, all types of stress. He is able to cope up because he is fit and he is obedient. So these are the properties which are even appreciated in Ayurveda. So what is medicine? Medicine is chemical or compound used to cure, halt, or prevent a disease. It eases symptoms and helps in diagnosis the pains. What is a therapy? Therapy is a medical treatment attempted remedial of health problem using following medical diagnosis. As a rule, each therapy has indications, contraindications, and there are different types of therapies. But all therapies cannot be applied at a time. I just received this today in the WhatsApp University, and I'm proud to share the 3 gems of my country, my motherland. So I sent this photograph to my son, and he has given this to share on this pious and prestigious platform. This is what he has written. From left to right, it's Major Dhyan Chand, the first gold
that came to India, the flying Sikh, Milkha Singh, Rustam-e-Hind, Chandragupta Maurya, Bajrang Bali, that is Dara Singh. They are the pride of India, and I feel so bad in saying that they struggled their whole life. Milkha Singh died very badly. Dara Singh was in his bed during his last days. Don't know much about the end of Dhyan Chand, but I know that all the three suffered financial crisis, and yet they brought glory to India. They were tigers, undefeated soldiers of my country. So that is what a sports person can do. They are also soldiers of the country, protecting the pride of the country in all occasions, in all ways. They can bring glories to our motherland. So self-care and social support, that is healthy and reacting, that's normal functioning. Reacting is common and reversible distress. Professional care, so you can divide this into two groups, self-care and social support, and another is professional care. I'll be talking on both of them, self-care and social support, and professional care when they are injured or ill. That illness can be seasonal also, can be infectious also, can be physical, can be emotional, can be psychological, can be social also. They are, after all, humans. They have their weaknesses, and we need to understand that even if we worship them, they are humans, they have human weaknesses. So there are 50 known therapies. Out of them, majority of them talk about emotional, social, psychological therapies. But the play therapy, which they have mentioned, is our sports therapy, and that has also been advocated by Ayurveda. Ayurveda also believes in play therapy. What is Ayurveda? Hitahitam sukham dukkham ayustasya hitahitam gnanam cha yatcha tatroktam ayurveda sa uchyate. What is good for us, what is not good for us or harmful to us, what gives pleasure to us, what gives displeasure or pain to us, is Ayurveda. The knowledge of all this is Ayurveda. What is the definition of health? So WHO has accepted it. Samadosha samatnishcha samadhatu malakriye prasanna atma indriya manaha. And that holistic health is what a player always wants. Now, there are body types as per Ayurveda, and that is related with the Panchamahabhuta. So when Shukra Shonita Sanyoga occurs in the Garbhashya, that is uterus, then the Prakriti Jayate Tena. The Prakriti is determined, and that Prakriti remains forever because it is the constitutional Prakriti. Sharirendriya Sattvatma Sanyogo, that is the body, the Chetana Purusha, about which we talk, about which we think, about which we discuss. So that Shaddatmatmak Purush or 24 element Purusha is the Purusha, that is Chikitsya Purusha. When the Chetana Dhatu or Atma is gone, then the Panchamahabhuta have no place in treatment or even talking about them. So how do we maintain that Sharirendriya Sanyoga? So that importance, why we should talk about Punarvittam Punarmitram, Punar Bharya Punarmahi, Etsat Sarvam Punarlabhyam, Na Shariram Puna Punaha. This body cannot be acquired again. Once it's gone, it's gone. The other body that we will be getting in our next birth will not be from these parents. It will be different. Even if these parents beget us, it will not be the same body which we are at present in. So that is the importance of this body and why we need to discuss about all this.
So what governs is the emotion, the psyche, the sleep, the food, the exercises, and care of the murmurs. These are very important. So the Ayurvedic clock, 24 hours, dawn to dusk or day to night, whichever we call it, the Vata, Pitta, Kapha, and the Panchamahabhuta, according to the season, according to age, according to the habits, according to the emotional status, have a definite action on the body and mind. So if we wake up in Brahma Muhurta and exercise, the whole day gets very, very pleasant. We feel the pleasant and we feel the sportiness. We are able to just discard so many negative thoughts or negative behavior from our life, from our thoughts, from our actions. So that is very important. And when we wake up in Brahma Muhurta, we are able to focus on our Shad Chakra. We are able to see that they remain in a harmony. And so, because of this Shad Chakra harmony, we are able to have a harmony in our Sahasrara. There are no chaoses there. And because of both this and the Ayurvedic clock, that is the body clock which we actually have from birth, balances our Panchamahabhuta, our three doshas, and so our physiology. Ritucharya has its own importance. Since we are talking about sports people, we need to see that the spring, summer, fall, and winter. So if we take the 4 Ritus, we have actually Shad Ritu. But since I could not have time for all these details, I've just put the chart over here. Ardhya Shaktya Nishe Vastu, Balibhi Snikta Bhojivi, Shita Kale Vasante Cha, Mandameva Tato Anyada. So a strong person should eat hitakari food, half of his energy for Vyayama. And what he should do? Snikta Bhojivihi. There should be sneha in his food. Now at present, because they don't know the importance of sneha in food, sneha in life, sneha also means emotional support, social support, family support, that is sneha. So that support and food, because we know the importance of Vayu in our body. Vayu is needed for the body actions, and vitiation of Vayu creates multiple problems. A sports person always has to have some or the other activity. The moment they stop doing their activity, their Vayu gets vitiated, and that leads to many problems. So, Shitakale Vasante cha Mandameva Tato Anyata. Shitakale and Vasanta Vyayama can be done, Ardha Shaktya, but in other seasons, for example, during summer and rainy season, person is not able to do that much Vyayama. Now, if we talk about this to a sports person or a sports coach, they will just laugh at us that if we do that, तो हो गया, ये वो कुछ कर ही नहीं पाएगा. So how to make it practical? So we can increase the energy level of the sports person. How do we increase the energy level of the sports person? By determining his prakriti, and since is my subject embryology, when the parents have determined that they want to see that the child, that in non-born child, the child who has not taken birth yet, they want to see that that person, that child becomes a sports person, then they have to take Balya Rasayana drugs, Sneha Yukta drugs, and see that they follow the Dincharya, Ritucharya, and specifically the Achar Rasayana. That gives too much strength to the baby, and that baby is able to tolerate many things. So, Bala, that is Prakritik Bala, inherited strength
that baby is able to cope up with all types of stresses and make the baby a strong sports person. So the three people, the triad I talked about, had inherited Bala in them, and because of that, whatever they got for food, drink, exercise, stress, they could avoid negativity and gain results. So they had a pinpoint target. I want to win, and they won. So that can be done by our present youngsters also. So we can talk about Vata Shaman Ahar, Pitta Shaman Ahar, Kapha Shaman Ahar, but it changes with age, it changes with the season, changes with the emotional status. What counts is the fluid intake. So now they say that fluid intake, you take this and that, but now it has been proved that with fluid, if we understand water, H2O, and take raw fruits, they chew the raw fruits, they don't take juice, then it helps better. This Apyanga Macharet Nityam Sajara Shramavataha Drishti Prasada Pushti Ayu. And as Sir has said, the Marma points, if given proper Apyanga, Svedana, then the whole body, the muscles, the tendons, the joints relax. So they have come that Vata Prakriti, Pitta Prakriti, Kapha Prakriti person should be used such oils. Since there is too much talk of Apyanga on the net, and other countries are also accepting our Apyanga, and they need pure things there. So these oils are available in every country of the globe. So that way they can use it and see that their body remains fit and they are able to enjoy staying in this body. So Shirodhara is also a good practice. Ayuhu kamayamanena dharmartha sukha sadhanam ayurveda upadesheshu videyaha paramadaraha. Please have faith in Ayurvedic texts, and try and go through them. Ayurveda will definitely bring about changes in the performance of the sports people and definitely create confidence in others who want to pursue sports as a means. So, importance of sports, it broadens outlook, physical, mental health, obedience, self-discipline, development of leadership qualities. All this is again told in Ayurveda as Vyayama. Importance of sports in daily life. Vyayamat labate swasthyam, dirghayushyam balam sukham, arogyam paramam bhagyam, swasthyam sarvartha sadhanam. So this slope has not been talked of much. That's why I put up over here. Regular physical activity helps prevent and treat NCDs, heart disease, stroke, diabetes, cancers. They have mentioned breast and colon, but I have seen that even other cancers, skin cancer also, regresses when a person comes in daily sports activities. Helps prevent hypertension, overweight and obesity, mental health, quality of life, and well-being. So sports is needed. See, in this Khelo India logo, I have added some things. This logo says, साथ में हैं हम. तो आयुर्वेद हर sports person के साथ है. Ayurveda is with all types of sports person, and we advocate people taking part in some or the other sports. Even senior citizens can take part in sports. So Ayurveda is medicine of the gods, and we are a science, holistic science, 5,000-year-old
Indian science. Thank you. Take home messages. Ayurveda can help in indoor games, outdoor games, can help in team games and individual games, can help in winter games, summer games, rainy days games. So Ayurveda, yan ihasti tadan yatra, yan ne hasti na tatvachit. I have practically seen that Ayurveda does help in all types of games, all types of prakriti of the sports person, all types of prakriti of the coaches. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. So nice of you, madam. Thank you very much. Really, you are blessings for us. Thank you. Thank you very much. Agnihotri sir. Sir, thank you so much. Thank you so much, Professor Pawan Sharma ji. What I was listening, not I, rather we all were listening, was the message that a person who is full of knowledge, may be retired from any post repeatedly, may not be kept aloof from the mainstream. Otherwise, the free flow of knowledge will be restricted. So, इस ज्ञान के अविरल प्रवाह को निरंतर बहने देना चाहिए, जिससे मैडम जोशी समेत उन सभी विद्वानों का ज्ञान हम सबको और नई पीढ़ी को अनवरत रूप से मिलता रहे। ये अविरलता और अनवरतता दोनों ही अपने में एक दूसरे के समानार्थक और पर्यायवाचक हैं, और हमारा IRES इसी का पक्षधर है। हमारी मेन जो व्यवस्था है IRES के द्वारा विगत 3 वर्षों से, वो इस बात के लिए ही कृत संकल्पित है कि ज्ञान जिसके पास है उनको इस स्थान तक लाएं और हम सब लाभान्वित हो सके। कितने ऐसे सब्जेक्ट पर, अब तो खैर चाहे NCC हो, NSS हो, सभी में हमारे महिला खिलाड़ी, पुरुष वर्ग के लोग, सभी लोग जुड़ते हैं, लेकिन आयुर्वेद के पक्ष को इतने तरीके से स्थापित करना कि अगर आयुर्वेद के नियम कायदों को पालन किया जाए तो वही दिनचर्या, वही हमारी स्वास्थ्यचर्या जो है, वो एक अच्छे नागरिक, चिकित्सक, डॉक्टर, वकील तो बनाती है, अच्छा युवा खिलाड़ी भी बनाती है, और खिलाड़ी होना देश के लिए मान की बात है। इसीलिए जाके भारत सरकार ने इतने चिंतन के बाद ये विषय निकाला कि खेलो इंडिया, हम सब आपके साथ हैं, और यही वजह है। अभी हफ्ते और पहले ही हम लोगों ने याद किया उस 25 जून 1983 की घटना, जब भारत को पहली बार क्रिकेट के फील्ड में विश्व कप हासिल हुआ था। तो ये सब स्पोर्ट्स की देन है। भारत हमेशा से ध्यानचंद जी से लेके, मिल्खा सिंह जी से लेके, PT उषा से लेके लाभान्वित होता रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में, इन नामों के शब्दों के साथ में हम मैडम जोशी जी का बहुत आभार करते हैं कि उनके पास ये ज्ञान राशि बनी रहे, और ये वो ज्ञान गंगा से हम लोगों को हमेशा अवगाहन कराती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। मैं अब डॉक्टर प्रांजल जोशी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। He is the expert of physiotherapy, assistant professor in the institute. Welcome, welcome, Dr. Pranjal. Welcome. Now 10 minutes are yours. Hariom Sarji, thank you so much for giving me this platform. I would like to thank Dr. Pawan Sharma sir, Dr. Professor Agnihotri Sarji, the Professor Nishant Shukla Sarji for providing me such an opportunity. Today, as myself, Dr. Pranjal Joshi, I am sports physiotherapist. I am currently working under Sports Authority of Gujarat at Vadodara. मैं थोड़ा इस चीज को हिंदी में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझे कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स के अंदर की जो इंजरीज है उसका मेजर रोल क्या है। जैसे कि अभी जैसे मेरे से पहले प्रवक्ताओं ने बताया कि जो पहले के जमाने के जो स्पोर्ट्स पर्सन थे इतने जुनूनी थे कि ऐसे भी हुए हैं कि चोट गहरी होने के बावजूद उन्होंने खेल को कंटिन्यू रखा है और सामने वाले का मुंह तोड़ा है, और उनको बताया कि हम जो भारतीय लोग हैं, भारतीय संस्कृति में जो पले बड़े हैं, वो इतने कमजोर नहीं हैं कि छोटी सी चोट को लेके हम पवेलियन में वापस चले जाए।
और इसी चीज की वजह से, क्योंकि मैं खुद कराटे प्लेयर हूँ, तो मैंने भी काफी सारी इंजरीज फेस की है। जैसे एंकल ट्विस्ट हुआ है मेरे, बहुत बार नी इंजरीज हुई है, शोल्डर में भी बहुत बार पेन आया हुआ है। और एक बार तो ऐसी किक मुंह पे लग गई थी, जब मेरे कोच ने मेरे को बहुत डांटा भी था इस चीज के लिए कि मैंने ब्लॉक सही से नहीं किया था। और किक मेरे फेस पे इतनी जोर की लगी थी कि मेरे को ऐसा लगा था मेरी गर्दन ऑलमोस्ट घूम गई थी। तो वो जोर का झटका भी मैंने महसूस किया हुआ है। इसलिए मेरे को स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में इतना तो ख्याल है कि अगर इंजरी हो जाती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेयर जो है वो अपना मनोबल भूल जाता है और एक बार बैठने की कोशिश करता है। पर क्योंकि हमारे देश में हमारी संस्कृति है कि इतनी जल्दी हम बैठते नहीं है, जब तक युद्ध खत्म ना हो तब तक तलवारें भी चलती रहती है। जैसे हमारे बातीजी महाराज थे, वैसे ही उसी तरह की स्पोर्ट्स है। और मैं ये सारे जो उदाहरण है वो इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स जो है उसके अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो आर्मी से कम नहीं होती है। आर्मी की ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग एकदम बराबर की गिन सकते हैं। अब जैसे कि ये जो हॉकी के प्लेयर्स हैं, वो हॉकी के प्लेयर्स जितने यार्ड्स भाग सकते हैं उतने यार्ड्स एक नॉर्मल इंसान नहीं भाग सकता है। उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग वाला इंसान ही चाहिए, जो आर्मी या कोई अच्छी जो होती है फोर्स उसमें होता है। अभी करंटली आज ही कल ही मैं कलकत्ता आया और यहाँ पे मैंने देखा कि कलकत्ता में एक बहुत बड़ा ही स्पोर्ट्स का स्टेडियम है, सॉल्ट लेक स्टेडियम है, जहाँ पे फुटबॉल का इतना जोरदार टूर्नामेंट होता है, लीग होता है कि लोग पागलों की तरह यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करते हैं। मतलब कि स्पोर्ट्स का क्रेज अभी भी हमारे देश में है। पर इसके अंदर एक चीज और जुड़ जाती है जो मैं बहुत जगह से सुनता हूँ, और इसीलिए इस चीज को मैं ओपन प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूँ कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीजें हैं। स्पोर्ट्स हर गली में मिल रहा है, हर गली में हर बच्चे ना ये क्या फुटबॉल में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, खो खो, ये वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सारी स्पोर्ट्स खेलते हैं। और मैंने देखे हैं बच्चों को यहाँ पे, खास करके कलकत्ता में तो हर जगह पे ये क्या बोलते हैं फुटबॉल का क्रेज इतना छाया हुआ है जितना मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक। अब ये चीज तो सेकेंडरी होगी। मेजर जो चीज है उस पर मैं बात लाता हूँ कि स्पोर्ट्स इंजरीज जो हैं वो किस किस तरीके की हो सकती है और कौन से बॉडी पार्ट्स में हो सकती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज जो हैं वो मेजरली बोन्स, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन, इन सब जो चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा देखी जाती है। और अभी तो मोस्ट कॉमनेस्ट एसीएल, एमसीएल जो इंजरी है नी के अंदर की, उसके अंदर मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। अब जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कि अकिलिस टेंडन है, एंकल इंजरीज है, एल्बो इंजरीज है, हेड इंजरीज जिसके वजह से कंकशन होता है, उसका भी मैं एक एग्जांपल दूंगा कि कंकशन इंजरी में भी स्पोर्ट्स पर्सन कितना जेन्युइन हो सकता है। नी इंजरीज है, शोल्डर इंजरीज है, ये सारी इंजरीज को झेलते हुए भी एक इंसान अगर पूरी गेम खत्म करके फिर बाहर आता है तो वो जंग से कम नहीं है। अब सबसे कॉमनेस्ट जो इंजरीज होती हैं वो होता है फ्रैक्चर होता है, कार्टिलेज टेयर होता है, कंकशन जो मैंने अभी बताया, डिसलोकेशन होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वॉलीबॉल या थ्रोइंग गेम्स जो होती है जैसे क्रिकेट हो गई, बेसबॉल हो गया, इन सब के अंदर डिसलोकेशन होता है और बहुत सीवियर होता है। कबड्डी के अंदर जो नी ट्विस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है। टेंडिनाइटिस होता है, स्प्रेन और स्ट्रेन जो है वो तो बहुत ही लाइटली लेते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स में। और ये जो स्पोर्ट्स की जो ट्रेनिंग जो होती है, जो मैंने देखा है यहाँ पे जब से मैं ये स्पोर्ट्स की फील्ड में जुड़ा हूँ, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर दी जाती है। जैसे मेरे पूर्व जो प्रवक्ता ने मैडम ने बताया है कि प्रातः काल में जितना हो सके उतना अच्छे से ट्रेनिंग हो सकता है, और वही सबसे बेस्ट टाइम होता है एक बच्चे को मोल्ड करने के लिए कि वो स्पोर्ट्स को कभी छोड़े नहीं। अब स्पोर्ट्स में इंजरीज किस तरीके से हो सकती है, जैसे कि कोई कॉम्बैट इंजरीज है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है जिसके अंदर एकदम से इंसान को गिराना होता है, जैसे कबड्डी है, कुश्ती हो गई है, ये फुटबॉल या रग्बी हो गया है जिसके अंदर टकरा के इंसान बहुत जोर से पछड़ाता है, वो तरीके की हो गई है। अब बैड हैबिट्स होगी जिसके अंदर प्लेयर्स जो हैं वो इतना लाइटली लेते हैं कि वार्म अप नहीं करते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, कूल डाउन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई नहीं करता है। फिर सबसे जो अभी ट्रेंड पे चल रहा है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको कम इंजरीज हो और वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके,
इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। पर क्योंकि हमारे गांव में ऐसी चीजों का अभी तक वो दिया नहीं है किसी ने नॉलेज, इसलिए ये क्या होता है, उन लोगों को ऑड पड़ता है, वो लोग ये चीज पहन के खेल नहीं पाते हैं। फिर शूज जो होते हैं, जैसे हमने देखा है कि जो हमारे भारत का सबसे पहला गोल्ड था हॉकी के अंदर, उस वक्त उन लोगों से शूज पहने ही नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो शूज जो है वो उस घास के ऊपर चल ही नहीं पा रहे थे। पहले तो वो चीज ये है कि वो खुले पांव से खेलने वाले लोग थे, ऊपर से उनको ऐसी घास पे ऐसे शूज पहनाए गए कि वो फिसल के गिरने लग गए। तभी उनको क्या बोलते हैं कि उनके जो टीम मैनेजर है, उनके जो मेन लीडर है, उन्होंने बताया कि भाई तुम अगर पैर निकाल ये शूज निकालोगे तो तुम्हारे पैर जमीन पड़े रहेंगे। तब जाके उन्होंने खेला ये चीज। फिर एकदम से ही क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स में खेलना, जैसे जिसको बोलते हैं रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स पर्सन, जो नॉन इलाइट होते हैं। ये नॉन इलाइट स्पोर्ट्स पर्सन करते तो बहुत अच्छा परफॉर्म है, पर ये परफॉर्मेंस देने के बाद 1 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहते हैं। ये स्टोरी किसी को नहीं पता है। ये लोग परफॉर्म अपना, क्योंकि उनको उनका हुनर दिखाना है, उनको पर्सनालिटी दिखानी मार्केट में कि हम कर सकते हैं। कर सकते हो, हाँ हम मानते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम, you should not perform any sports activities because it will lead to the injuries। और यही इंजरीज जब आगे जाती हैं बुढ़ापे में, इंसान को और ज्यादा बड़ा बुढ़ापा फेस करना पड़ता है। अगर वो 60 साल का है तो 80 साल 90 साल की जो बीमारियां होती है वो उसको फेस करनी पड़ती है। इसलिए रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स करो, कोई बात नहीं है, पर प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्सरसाइज को फॉलो करो। अब प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि जिम में जाके हवा फुलाओ। जिम ट्रेनिंग इज नॉट अ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ऑन फील्ड होती है, प्रॉपर वार्म अप होता है, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, एजिलिटी ट्रेनिंग होती है उसमें। वो सब चीजें को फॉलो करते करते लास्ट में कूल डाउन के साथ में अपना जो गेम है उसको कंप्लीट किया जाता है। अब जैसे कि ये स्पोर्ट्स इंजरीज होती है तो सबसे ज्यादा साइंस एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? एकदम से दर्द होने लग जाए, टेंडरनेस आ जाए, छीलना हो जाता है जिसको बोलते हैं ब्रूजिंग बोलते हैं, किसी तरीके की डिफॉर्मिटीज होता है, जैसे माइनर स्पोर्ट्स इंजरीज होती है, जैसे एयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। और स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसको नेग्लेक्ट करता है कि हाँ छोटा सा दर्द है, उसको जान देते हैं। ये हेलन फ्रैक्चर माल फॉर्मेशन की तरफ ले जाता है, एक्स्ट्रा कैलस फॉर्मेशन वहां पे होता है, जिसकी वजह से वो डिफॉर्मिटी की तरफ जा सकता है। अगर एसीएल इंजरी हुई है, उसने इतना ध्यान नहीं दिया है ग्रेड 1 के अंदर, तो उसको और ज्यादा सीवियर इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से उसका टेंडन टूट भी सकता है। और एक बार टेंडन टूट गया तो उसका रिटर्न टू स्पोर्ट्स बहुत ही मुश्किल है। ग्राइडिंग, क्रैकिंग, क्लिकिंग, पॉपिंग साउंड्स, ये सारी जो चीज है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। जैसे स्वेलिंग हो गया है, फिर स्टिफनेस आ गई है, मसल वीकनेस हो गई है। तो मसल वीकनेस के अंदर हमको उस मसल को रिट्रेन करना पड़ता है। और ये मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक मसल की बात कर रहा हूँ, ग्रुप ऑफ मसल्स की बात नहीं कर रहा। अगर एक स्पेसिफिक मसल को लेके हम चल रहे हैं तो ही उनको अच्छे से रिट्रेन कर सकते हैं, और उसी वजह से हम उसको प्लेयर को अच्छे से परफॉर्म करने पे पुशअप कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को लेकर एक बड़ी सी वो जो होती चैलेंज, वो ये होता है कि कोचेस जो होते हैं, कोचेस यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा है वो कर लेगा। यहीं पे मैं आपको कंकशन का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक रग्बी का प्लेयर था, बहुत अच्छा प्लेयर था, उसको शायद इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट भी करने वाले थे। यही क्या बिहार का बच्चा था वो। ज्यादा उम्र नहीं रही होगी, 22-23 साल की हुई होगी। और हाल ही की बात है, वो ज्यादा पुरानी भी बात नहीं है। उसको सडन एकदम से हेड इंजरी हुई और वो खड़ा भी हो गया। उस बच्चे ने हिम्मत दिखाई, खड़ा भी हो गया। उसने जो हम क्वेश्चनर करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि पेश जो प्लेयर है वो कॉन्शियस है नहीं है, उसका मोटर फंक्शन कैसा है, उसका सेंसरी कैसा है, उसका ब्रेन अभी प्रेजेंट में चल रहा है या अभी कंफ्यूजन स्टेट में है। ये सारी चीजें जो है उसने सही सही जवाब दिए थे। क्योंकि कंकशन है इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि ऑन स्पॉट पता नहीं चलता है कि हेड इंजरी बहुत सीवियर हुई है या नहीं हुई है। अब यहाँ पे क्या हुआ इस सीन में, प्लेयर था, सहन कर लिया, उसने बोला मेरे को गेम तो खेलना है, क्योंकि पूरी गेम उसके ऊपर ही थी। अगर वो बाहर बैठ जाता तो उसका गेम एंड हो जाता। उसने स्कोर भी किया, टीम जीती भी सही। फिर उसको अचानक से ही बाहर स्टेडियम से बाहर निकलते ही वॉमिटिंग स्टार्ट हुई। यही सबसे पहला साइन होता है सीवियर कंकशन का। वॉमिटिंग स्टार्ट होते ही उसको तुरंत ही हॉस्पिटल भेज दिया गया।
हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, 3-4 दिन वो प्रॉपर कोमा में रहा। कोमा से बाहर आया, उसको क्वेश्चनर पूछे तो उसको यही था कि अभी तो मैं जीत के बाहर निकला हूँ। उसको 3-4 दिन क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था। उसको बताया गया कि तुम्हारे लाइफ के 3-4 दिन ऐसे ही चले गए हैं, अब आपको आराम करना चाहिए, आपको टेक केयर करना चाहिए, ये मेडिकेशन है उसको फॉलो करो, और हो सके तो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल के पास में ही रहना। इन केस ऑफ इमरजेंसी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जाओ। पर बंदा अपना बिहारी था तो मानने तो वाला था नहीं। वो चला गया अपने गाँव। गाँव तो उसके दूर दूर तक क्लिनिक भी नहीं है, और अचानक से उसको अटैक आया। घर वाले समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है बच्चे को, और उसकी वहीं पे डेथ हो गई। अब ये जो सीन है एक्चुअली बहुत सैड सीन है कि हमारे देश में इतनी अवेयरनेस लाने के बावजूद बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कोचिज का एक्स्ट्रा मोटिवेशन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा हार्म कर जाता है। मोटिवेशन अच्छी चीज है, होना चाहिए, जुनून अच्छी चीजें होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा होना चाहिए, पर अपने शरीर के या अपने फैमिली के को सामने देखकर ये सब चीजें ध्यान में रख के हमें ये सब चीजें करनी चाहिए। अगर कंकशन है तो तुरंत ही स्पोर्ट्स को एग्जिट कर देना चाहिए, रिहेबिलिटेशन में चले जाना चाहिए। एटलीस्ट 2 to 3 months उनको कंप्लीट ट्रेनिंग से दूर रखना चाहिए, और हो सके उतना नियर बाय हॉस्पिटल के पास रखना चाहिए। अब ऑन फील्ड अगर कोई इंजरी होती है तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर एक प्रोटोकॉल है, SABCDE। एस जो है उसके अंदर हम सेफ अप्रोच करते हैं। जो भी मेडिक होता है वो ऑन फील्ड आने से पहले अपने ग्लव्स पहन के हाथ ऊपर करके बताता है। उसके ऊपर पिप किट लगी होती है जो येलो, डार्क येलो कलर का होता है, जो दूर से भी विजिबल होता है, और वो रेफरी को शो करता है और बोलता है कि मेडिक ऑन द फील्ड, जिसकी वजह से उसको पता चलता है कि हाँ भाई कोई प्लेयर है जो इंजर हुआ है। ये जो है जो भी डॉक्टर है उस वहां जाता है प्लेयर के पास। सबसे पहले हेड स्टेबलाइजेशन इज मस्ट। हेड स्टेबलाइजेशन, मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन, या स्पाइन जो है सर्वाइकल स्पाइन उसको स्टेबलाइज किया जाता है। फिर उसका तुरंत ही एयरवे चेक किया जाता है। अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है तो ब्रीदिंग और सर्कुलेशन चेक करने से कोई मतलब नहीं है, तुरंत एयरवे पे ही काम करना है। एयरवे पे काम करके फिर ब्रीदिंग लाओ, ब्रीदिंग चेक करो उसका प्रॉपर है कि नहीं है। अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है या वो कुछ चेंजेस है तो तुरंत उसको कम करो, उसको प्रॉपर करो। फिर सर्कुलेशन पे आओ। अगर कोई ओपन वुंड इंजरी है या ओपन फ्रैक्चर इंजरीज है तो सर्कुलेशन में उसको प्रॉपर बैंडेज से उसको बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो ब्लड लॉस है वो ज्यादा ना हो, जिसकी वजह से जो प्लेयर है वो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर ना चला जाए। ये सारी चीजें ध्यान में रखकर तुरंत ही जितना हो सके उतना जल्दी प्लेयर जो है उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि ये सब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट के अंदर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है वो ही उसको इलाज कर सकता है। अब उसके अंदर और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, माइनर इंजरीज के अंदर रेस्ट दे सकते हैं प्लेयर को, आइसिंग प्रोवाइड की जा सकती है, जिसके अंदर एंकल स्प्रेन या मसल स्ट्रेन होता है तो आइसिंग तुरंत दी जाती है। हमारे फिजियोथेरेपी में अलग अलग तरीके के मशीन्स होते हैं, जैसे टेंस है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्वस स्टिमुलेशन, फिर IFT इंट्राफेरेंशियल थेरेपी, फिर अल्ट्रासाउंड है। ये सारी जो थेरेपीज हैं उसका यूज करके हम जो इंजरीज है हुई है उसको रिड्यूस करते हैं और रिटर्न टू स्पोर्ट्स की तरफ ले जाते हैं। कंप्रेशन दे सकते हैं ड्यूरिंग हेमरेज या हेड इंजरीज, उसको एलिवेशन प्रोवाइड करके प्रॉपर स्ट्रेचर के ऊपर लेटा के उसको प्रॉपरली हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है एम्बुलेंस के थ्रू। ये सारी जो चीजें हैं उसको फॉलो करके हम अच्छे से अच्छी जो प्लेयर की जो फैसिलिटीज है उसको सुधार सकते हैं। अभी मैं खुश हूं कि हमारे हर स्टेट में स्पोर्ट्स का जो है वो क्रेज बढ़ा है। गुजरात में खेल महाकुंभ करके एक इवेंट होता है हर साल, जिसके अंदर बहुत सारे हजारों बच्चे जो हैं स्कूल लेवल से लेके जो कॉलेज लेवल, और अब तो जो जॉब करने वाले लोग हैं वो भी जुड़ने लग गए, और उन लोगों ने प्रॉपर ये इस चीज को प्रमोट करना स्टार्ट किया है। अब स्पोर्ट्स थेरेपी जो है वो क्या चीज है, जिसके ये स्पोर्ट्स थेरेपी क्यों इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स के लिए, ये लास्ट चीज है जो बोल के मैं अपने बात जो है समाप्त करूंगा। स्पोर्ट्स थेरेपी जो है उसके अंदर जो प्लेयर होते हैं उनको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोवाइड की जाती है। ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग क्या है,
स्ट्रेंथ तो हम जानते हैं, उसके वर्ड के अंदर ही हमको पता चल रहा है कि जो भी प्लेयर है उसका जो भी गेम है उसके अंदर उसका इम्प्रूवमेंट अच्छा हो, गेम में उसका परफॉर्मेंस और अच्छा हो सके, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव की जाती है। पर हम सबको पता है ये चीज कि जो भी चीज की हम आदत डलवाते हैं शरीर को वो हैबिचुअल हो जाता है। और मान लो कि अभी अगर 5 टाइम आप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर आप कंटिन्यू करते हो तो 5 टाइम की हुई एक्सरसाइज आपको असर नहीं करेगी, आपको 6 या 7 बार करनी पड़ेगी वो एक्सरसाइज। वो जो रिपीटेशन बढ़ रहा है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो बॉडी उसको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी की कंडीशनिंग है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का कंपोनेंट है प्रॉपर, वो बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। यही सब चीजें जो है वो स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट ध्यान में रखता है। उसको इंजरी ना हो, अगर हो तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और सॉल्व करके जो प्लेयर जो पहले परफॉर्म करता था उससे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कैसे कर सकता है, वही चीज करने के लिए जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट होते हैं, उन सबको अपॉइंट किया जाता है। अब इस चीज के अंदर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करवाना चाहता हूँ। जितना अच्छा रोल कोचिज का होता है, मैनेजर्स का होता है, जो टीम को संभालते हैं उनका होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट का होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का होता है, ये न्यूट्रिशनिस्ट का होता है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वाले जो होते हैं उनका होता है। और इन सबको जितना क्रेडिट दे सकते हैं उतना कम है, क्योंकि वो लोग बैक स्टेज में रहकर प्लेयर की सारी देख रेख करते हैं और उनको संभालते हैं और उनको इंजरी से दूर ले जाते हैं, ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सके और हमारे देश को और आगे ले जा सके। इसी के साथ मैं मेरी बात को यही समाप्त करना चाहता हूँ, और आखिर में मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को इतना अच्छा मंच दिया, मेरे इतने अच्छे वो जो अनुभव है उनको शेयर करने के लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा। वेलकम टू कलकत्ता। वेलकम टू कलकत्ता। थैंक यू अग्निहोत्री। सो मच। आपने एक काम और कर लिया, कलकत्ता में आए हुए हैं तो अब आपने अपने को होस्ट माना। वैसे भी आप IRES के होस्ट नहीं है, तो कलकत्ता के लिए भी प्रोफेसर पवन शर्मा जी आप जो है प्रांजल जी को जो है हॉस्पिटैलिटी ऑफर कर रहे हैं। प्रांजल जी भाई, जैसा हम अपेक्षा करते हैं हमेशा आप उतनी बढ़िया बातें बताते हैं, बिल्कुल एक बातचीत के सेटअप में, जैसे नहीं एक भेंट वार्ता, उस क्रम में आपने सारी बातें बता दी और वो कष्ट भी बता दिए जो स्पोर्ट्समैन को झेलने पड़ते हैं जब भी कभी वो ओवर इंथुजियाज्म में या डेयर टेकिंग करके कोई काम कर लेते हैं। जैसे आपने बताया, मैं पहली बार सुना कि अच्छी हिट निपटाने के बाद, निकालने के बाद उनको एक महीने रेस्ट करना पड़ता है, जो अनस्किल्ड और अनट्रेन्ड तरीके से ओवर इंथुजियाज्म करते हैं। बट स्टिल एक चीज है कि अगर चोट भी लग जाए, अगर थकान हो भी जाए, अगर कोई गलती कमी हो भी जाए, तो आप लोग हैं उसमें से निकाल के बाहर लाने के लिए और पुनः एक बार उनको एक रिहेबिलिटेट करके एक अच्छे नए स्पोर्ट्समैन के लिए बनने के लिए आपका इस जगत के लिए, इस फील्ड में काम करने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपके थैंक यू ज्ञान सो से हम मच लोग सर। भी लाभान्वित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओवर टू पवन शर्मा जी। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत आभार। फॉर्चुनेटली डॉक्टर श्रीवत्स जी अभी तक जुड़े हुए हैं, यदि आप उनसे कंक्लूडिंग रिमार्क लें। और अभी अमेरिका के लोग तो अभी तक नहीं जुड़े हैं, अब मैं हाँ, व्यवस्था अच्छा, करूँ तब तक हाँ, सेशन ओपन। हमारी आज की जो दूसरी वेबिनार का जो मैंने स्पोर्ट्स और स्पेशली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के क्रम में ये हाईलाइट करने की रखी थी, उसमें हमारे अतिथि वक्ताओं ने अपनी दी। हमारे शिवस जी तो शुरुआत से बहुत ही अथॉरिटेटिवली मर्म चिकित्सा और मर्म विज्ञान की जो विशेषताएं थी उन पर चर्चा की। मैडम पारुल जोशी जी ने पूरे क्षेत्र को कवर किया कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से शरीर स्वस्थ है और एक खिलाड़ी का शरीर भी स्वस्थ बनाए रखे, उसके लिए आयुर्वेदिक जो हमारी रहन सहन है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उस पर बहुत ज्यादा उन्होंने प्रकाश डाला और उसके लिए आग्रह किया कि अगर अपनाया जाएगा तो गुजरात में विशेष रूप से खेलो गुजरात भी चलेगा और खेलो भारत, खेलो इंडिया भी चलेगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि एक जो उन्होंने स्लोगन दिया, वी आर प्लेइंग गेम, वी विल विन। अगर ये कॉन्सेप्ट किसी के दिमाग में बैठ जाए तो एक बार प्लेयर छोटा भी हो तो भी वो अच्छे काम कर ले जाएगा। और जो शेष में जो समअप किया हमारे डॉक्टर प्रांजल जोशी जी ने, उन्होंने उस एंगल से किया कि कितने कष्टपूर्ण जीवन झेलना पड़ते हैं बड़े बड़े माने अच्छे एथलीट को भी।
तो स्पोर्ट्स में देश से बाहर जाते हैं, मेलबोर्न खेलने जाते हैं, इंग्लैंड खेलने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह जाते हैं। अक्सर कहा करते थे, हमें याद आ रहा है सचिन तेंदुलकर जी, कई बार जब चोटें लगी कहते थे पता नहीं उनके लेफ्ट लेग की लिटिल फिंगर तो बिल्कुल चूरा है, उसके बोन्स बिल्कुल पार्ट हो गए हैं, और उसके बावजूद वो इतना टाइट होके पूरे कस्टम को गेटअप होके पहनते हैं और दौड़ते हैं 22 गज की दूरी को। तो है उनका जीवन इसी पे ख्याति है, तो डैमेजेस भी उठाने पड़ते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग रहे, उनके फिजियो साथ चलते हैं, सब तरीके के उनके साइकोलॉजिस्ट साथ चलते हैं, तो हमारा स्पोर्ट जर्नलिज्म भी सर्वाइव करता है। भारत काफी ऊंचाई तक पहुंचा हुआ है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ में एक बार पुनः हमारे अगर शिवस साहब मौजूद है, ये प्रोफेसर साहब एमबी शिवस जी, तो हम उनको उनके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए, उनके आशीर्वचन के लिए पुनः एक बार समाप्त करने के यथा निर्देशित आग्रह करते हैं। आइए, आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक पर अपनी चर्चा पूरी करिए और फिर हम लोग अगली शिफ्ट में चलेंगे। English, sir, English. Oh, I with very honorably request our the first speaker of our the second webinar, Dr. M.B. Shivas sir, as he has gone through the presentation of other guest speakers of today's this webinar. So I would invite him. I would like to invite him for his concluding remarks that how a person, especially in general and sportsmen in special, can keep their body mentally and physically fit for the sports spirit and sports competitions. Thank you, sir. Please, namaskar. Dr. Srivas, sir, your concluding remarks, sir. बेटा ये नहीं करो. Namaste, sir. Welcome, sir, again. It is a good opportunity that I could be here with you all. And today's session maybe considered that it has contributed a lot with the presentation by Dr. Pranjal Joshi and Professor Vaidya Parul Joshi, as remarked by Agnihotri sir. It was a flow of knowledge from Vaidya Parul Joshi, and her association with Kelo India in Gujarat has given her a lot of this one, and I feel that I would like to interact with such people who are in or Krida Ayurveda to hear and listen to Thank you, sir. Now, how sir. the Ayurvedic concepts are helpful in sports medicine as well as in general health care. I am very happy that the presentations were very much remarkable, and I congratulate the other speakers also. Pawan Kumarji, I don't know whether I am the fit person to make a inauguration or a conclusion or anything like that. I am just joining with you, and because you call me for the final comments, I feel that this topic has to be widespread, spread wide over, and then all this where we are strong should be and of Ayurvedic knowledge worldwide. So you are doing a great job in this forum. I once again congratulate you, the team which is behind this, and also thank for giving me an opportunity towards this. Thank you very much.
Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Agnihotri, sir, now the session is open. I think our Miss Stina Anderson is very much with us. I don't know with this name she is here. So first of all, I would like to invite her for all today's two webinars comment so that we will. Miss Stina Anderson, ma'am, you are here. Madam Stina ji, are you listening me? No, yeah. Okay. She's not there. Well, with the completion of the guest address by our guest speakers, here we are to take the Session is open, sir. We can take opinions. most experienced remarks in a form of opinions with our distinguished guest speakers, a discussion, and a person, those who are available with us, means Professor, Honorary Professor L.K. Dwivedi, sir. If other persons out of our participants list would like to submit something, please raise your hand so that I would be in position to invite them by name, and we will be enriched with their views also. So I am just